Good afternoon, participants. Dr. Kamra, are you there? Yeah, sir. Yeah, my voice audible, Singlai clearly, Yes, yes, it is. and screen is also visible. Fine. Yes. ठीक है. So, participants, good afternoon. So, here again, welcome to the last session of the day 3. So, today our expert Dr. Amit Kamra is with us. So now I'll call Professor Harpreet Kaur to introduce expert to all the participants. Hello everyone, welcome back. So our next speaker is Dr. Amit Kamra. So Dr. Amit Kamra is working as an assistant professor in the Department of IT at GNDC Ludhiana. He has teaching experience of more than 18 years. He has done his BTech from PTU Jalandhar in 2001. He did his MTech in IT in 2004 from Punjab University Patiala. He is also PhD coordinator and institute NBA convener at GNDC Ludhiana. He did his PhD in computer science from Slight Longoval in 2014. His area of interest are data mining, network security, remote sensing, image processing, etc. He has received grants of more than 20 lakhs from funding agencies like AICTE, UGC, PTU Jalandhar. He has published papers in journals of good repute with indexing in SCI and Scopus. He has also written one book of computer peripherals and interfaces and published technical report with reputed publisher. He has worked in the capacity of assistant registrar, deputy controller of examination. He has guided 29 MTech theses and one PhD thesis and is currently guiding 3 PhD scholars. So we welcome you here, sir. Please start your session. Thank you, Harpreet. Thank you, Singlaji, for giving me a chance to speak to all the renowned persons all over India. So good afternoon to all of you, my friends. Many of participants are quite familiar with me. They have attended one FDP organized by me last month. Uh, and one thing I feel that it is a very difficult task to listen to the lecture, especially after a lunch. So, although we are attending this FDP in a virtual mode, yet we are connected virtually, and it becomes the responsibility of the speaker to tie up all the participants when they join after a good lunch. So it's my responsibility to entertain you technically. Uh, I always believe teaching is a learning and teaching is also a entertainment. We should be entertained when we learn from some instructor. And for the next 90 minutes, I'm your instructor, and my duty will be to teach you something new thing. Or although you might be have been familiar with this topic, nevertheless, there are always some good things to learn when you attend such sort of FDP. So the topic today is data visualization using a tool. I'm just going to discuss one tool called Orange. Okay, this is basically a tool for the people, not only from the computers working in computers and IT domain, from any other field also. They can use this tool for their research work. Let's start this tool. So with the growing need of the data science manager, we always feel that we need some certain sort of tools that can really make this process easy one. Okay, this data mining and machine learning task. See, many of the people are not from the computers and IT background, and let me switch off my camera. Many of the people are not from the computers and IT background. So the coding is not a cup of tea for all of us. Okay.
although we want to learn data mining or data science or machine learning, but the thing which creates obstacle to all of us is this coding part. So sometimes certain graphical user interfaces tools they come in handy, and we can readily use them in our research work. Okay, so Orange is going to uh, deliver that part where you don't need to know about the coding, but you need to understand what how we can use this tool in our machine learning application or data mining applications. See, I'm not going to discuss today any machine learning algorithm because you people have been listening to the lectures from the other experts where they might have discussed some good machine learning algorithm. I'm going to discuss about it. This was going to be basically a practical session when we planned this at lecture as a offline mode, this FDP, but due to this pandemic, the whole process changed and we have to convert this FDP into online mode. Otherwise, I must have covered this lecture in our college lab if you have attended our FDP through the offline mode. Okay. Now, what I'm going to discuss today is my voice audible? Please, anybody acknowledge because all of the participants are now sitting with me. Rupinder, are you there? Is my voice audible? Clear? Yes, sir, clearly audible. Okay, okay. Thank you. Upinder, please interrupt me if there is some issue because there is a power cut in my home, and if the net goes down, to please inform me. Okay, Okay. okay, sir, sure, I will. Okay, thank you. Now today I will introduce you to another very interesting tool, graphical user interface tool, that is Orange. Okay. So आजकल संतरे बहुत आ रहे हैं. When you visit to the market, you will find lot of orange nowadays. But technically, we are not going to discuss about fruit today. So this tool is basically for the beginners who want to visualize patterns. See, some people of you might be working on your PhD thesis, or some are MTech scholars. Every time you when design your report, you need some graphical analysis also. In fact, in the morning, I was talking with my supervisor, and we were discussing some research paper with him. So I got to remember at that time when I was doing my PhD, my guide always used to tell that your report should be a fully analysis based report. The point he was talking at that time, way back around 7 years back, that he always want that whatever results I have got, I must try to publish them in the form of a visual format. Uh, Friends, one thing I want to tell that at that time, way back in 2013 and 14, when my PhD was near completion, so I incorporated 2 to 3 types of plots in my PhD report. My topic was on this optimization only. So the last part was in machine learning. So I incorporated box plot in my report and ER diagrams. But after listening to this lecture of 90 minutes in the coming 90 minutes now, I will make you familiar with around 10 to 15 types of plots, which I am going to discuss, and around 40 to 50 type of plots you yourself can make according to your research work, corresponding research, what sort of work we are doing. Okay. So by the end of this lecture, you are also going to predict something. Basically, machine learning is optimization and prediction itself. We are working on some data, and on the basis of the analysis of that data, we are going to predict something, and we are going to visualize that data also. See, one of the I forget the name of the scientist who once said that something which you can express through numbers is uh, is less admirable something you express through the picture. Okay, so whatever data we got in our research work, we will be converting that into visual form so that it can be readily analyzed. It can be the analysis can be done in a very good manner. The Orange will be handy in those applications. Okay. So Orange, the first impression itself is the name that I earlier told. It's not a fruit. It's a basically open source tool. So no need to spend any single penny. You can readily get from the internet, and it is basically used for machine learning applications. And there are
some simple features for the novice user. If you are not familiar with the machine learning, has some simple uses also, and it has some advanced application also for the expert users. Okay. So what exactly is a Orange? Orange is basically a open source tool. Okay, it is a visual programming software package, and it is used for data visualization. Okay, Orange is basically meant for machine learning, data mining, data analysis. So whenever you install the Orange, you will find out certain components of the Orange. I will show you a snapshot also. Friends, I beg your pardon. I'm not going to able to show simultaneously all the coding part because the I have we have tried on Zoom also, and the otherwise there will be some sort of lag when I run the application. So whatever things are being done in the snapshot, or you can readily practice them. I will provide you a link also, and also this all these slides are also available to you. You can practice them later also. And in addition to this, I will give you some homework also, which you can practice it later on. So it will make you more comfortable in working in Orange. So the components of the Orange are called widgets. Widgets are uh, whatever the small components, or you can say the small tools which we will be using in visualizing the pattern. They are called Orange. Okay. I will be showing you all those things now. Just have a brief idea of, or it was the theoretical part, then we'll shift to the practical part. So what are the widgets? These widgets, they range from the simple data visualization. These are you can do some subset selection. You can do pre-processing of the data. You can all of you might remember some machine learning algorithm like k-means algorithm, this support vector machine classification, PCA, principal component analysis algorithm. All these algorithms are inbuilt in this tool, and you only need to apply the parameters related to those algorithms. Say if somebody is using support vector machine, you must know the terminology of the support vector machine and its associated concepts. Then only you can apply with some certain parameters which will be required to run that support vector machine classifier. And you can also do the predictive modeling. I mean to say that this is a tool where you will be providing some input to the corresponding machine learning algorithm, but you need to have the complete knowledge of that machine learning algorithm. You don't need to do any coding for that machine learning algorithm. I remember in 2013 and 14, when my work was in the last stage, I used support vector machine classifier for my research work, although it's now quite an old one. But I'm talking of the year 2013, around 7 years back. We did all the coding in the MATLAB. We got some results, and then we published, and then I converted that results through Excel in some sort of graph. If I have been familiar with the Orange at that time, my report could have been more better than which it is presently now. So on the Orange, in Orange, the visual programming is being used, but we are not going to discuss visual programming also now. Okay. So as I earlier told, that it is just a graphical user interface tool, and some advanced user can also use Orange as a Python library. If you have a good command or Python, you can use Orange for data manipulation. Although I'm not discussing, because in a span of 90 minutes, only a preliminary idea can be given to the participants. So there are certain features of the Orange. We will discuss these first. Then I will slowly take you to the implementation part. So the best part of the Orange is that it is a open source. Okay, you can modify the tool also if you have a good programming skill. This tool is very beneficial for the people doing PhD or masters in data science and machine learning. I suppose everybody is using machine learning or optimization or data visualization in any of the research work. So I have mentioned here some specific topics because I want it to be pertaining to the theme of the FDP, but Orange can be used in any of the application where you need to visualize that data in the form of some graph, in the form of some plot. Okay, you will get the source code of all machine learning algorithm also, but we don't need to cram or study that machine learning algorithm. Only you need to understand the concepts of the machine learning algorithm. You can modify that algorithm also and then take the results in the Orange. So Orange is a better tool, better and easier tool than MATLAB and C++, where we do the actual coding part.
in MATLAB, we need to write the script, while in C++, we need to write the programming code. On the other hand, Orange doesn't require either scripting or either programming. Okay. This tool is not just meant for the computer science professionals. I assume out of 40 or 50 participants who are joining this lecture, many of them might be not from the computers and IT background. So this tool will be useful for the many people who don't like coding. You don't need to study knowledge of Java, C++, or Python, but please make sure you must have a good machine learning and data mining concepts that are required. Okay? Um, you must know what sort of algorithm you are using, what sort of algorithm will be useful for your research work, and the concepts of that algorithm will must be you must have the complete knowledge of that algorithm. Okay, there are two important things written here. The Orange provide drag and drop facility. It provides lines for connection. I will be showing all those things now. Now, you will definitely fall in love with this tool when, after a span of 90 minutes, if you fall that this tool can be useful for your PhD or research work or your any of your peer. If you're guiding some student as a PhD or MTech scholar, you will definitely recommend him to use Orange because at any stage of the thesis writing, we need to incorporate some graphs, some plots, some visual analysis. This tool will really going to benefit all those people who are going to include all those things in their PhD or thesis reports. The good thing about Orange is that you have to make some sort of connections between the widgets. I will showing all those things, and Orange itself automatically identify if the connection is wrong. If the connection between the two widgets is right, we will get a thick plain line, and if the connection is wrong, the Orange will not work, and you will get a some sort of dotted lines will be appearing here now. Okay. So if you are not using some proper machine learning algorithm, then also the Orange will guide you that you cannot connect this thing with this thing. Okay. Orange, the very important thing about Orange is that it supports Google Sheets also. You can have the data from some URL also. I assume Weka have this possibility now. Earlier, Weka was not having this feature. You were not able to fetch the data from the URL. Suppose some data is available on some website or in some SQL repository or some spreadsheet. The Orange has the capability to directly you can import that data in in this tool itself. So it provides support to fetch the data from the spreadsheet, which is a very useful feature. Most of that machine learning tools, except Weka, they don't incorporate this thing. So if your data is not in the hard drive, you don't need to worry. The Orange will readily capture it from the URL also. Please, you can have the screenshot this for this slide. When you go on to install Orange, you will find many versions of Orange nowadays because they keeps on updating it. So you need to download and install the Orange. This is the link, orange.biolabs. It was designed by this organization, biolabs.si.download. Please make sure just confirm the number of the bits of your operating system because Orange is available in two versions nowadays, 32-bit and 64-bit. It is available different for different platforms. So just clarify, if you're installing 64-bit, which is not compatible with the 32-bit, it will create a problem for you. So it will not be able to work properly. So this is the link I have given also. My Windows was 32-bit, so I downloaded the 32-bit version. So you can update it as and whenever required. So let's start the implementation part now. So I'm not going to play the oranges simultaneously because I have to shift my slides again and again. So for your convenience, I have made the snapshots of all those steps. Okay, so it will be very easy for you to understand all those things. So when you start the orange, you will get a welcome screen. You can take it. It will never appear again. You can exit this welcome screen. Now, just here, this is the welcome screen. Okay, we have new button, we have open, we have see recent, getting started, tutorial, and documentation. And if you click this, show the startup, uh, it will not come again and again. Okay, let me
clear this. Okay. So this is the orange comes with the black canvas. When you open this screen, you will get a black sort of some canvas. Canvas is some drawing tool. We might be familiar with canvas. We used to buy it when we were school kids. So just canvas, we draw some drawing now. The similar thing will be done here. Okay. So the every magics have some secret ingredients, and those secret ingredients are your widgets now. Okay. You will be asked certain questions after this FDP in one of your tests, and these questions, 3 to 4 questions will be from Orange also. Please listen the lecture very carefully. Okay. Try to earn the certificate rather than getting the certificate. Certificate तो मिल जाएगा, लेकिन certificate अगर we study and listen to all lectures and then get the certificate, it creates a very good impact on your career also, and you are spending your precious time with me for the next 1.5 hour. So please try to listen all those things carefully, what I'm saying, because this is really going to help all those things. I'm not going to discuss a theoretical lecture today. So this is a real practical part which you can use in your daily life or in your research work or whatever work you're doing. This is the first we open the orange tool. We get the welcome screen. You can click the show at the startup. You can click here and it will not disturb you again and again. Okay. You're seeing the at the back of the screen, there are some sub widgets. These are some components: data, visualize, model, evaluate. On clicking these all buttons, we will get the other widgets which are a part of the data: visualize, model, evaluate, and unsupervised. Okay. Just see here. So I was talking of some secret ingredients of the orange. This widget is the secret ingredient of the orange. Widget, what are widgets? These are computational units of the orange. Through the widgets, you can read the data, you can visualize them. Some sort of machine learning application like clustering, predictive modeling, these all can be done. These all are on the left hand side of the screen. You just need to select the proper widget and it will start doing its work. Uh, I'm showing you this thing. This is the file. When we click on the data, we are getting these widgets. These all are widgets. File, data sets, SQL table, paint data, data info, data sampler, select column, select rows, rank, merge data. Okay. Somebody's written some question like, sir, your voice is low. Please speak loudly or put mic close. Okay. ठीक है. Thank you, Dr. Rupesh. Is it audible now? One second, I'm just changing the. It's audible, but there is some network issue maybe from your side. There is some No, cut I'm. cut के आ रही है कुछ. अच्छा, Rupinder, but I'm sitting on my lease line. I have a lease line connection at my home. चलो मैं Okay, ठीक है, sir. thank you. Sir, it's perfectly coming. Nice, sir. Audible. Okay. Sometimes, Dr. Parvati, there are network issues at our end also. Might be your end also. So we have to bear with this thing. But nevertheless, I will It's speak bit perfectly loudly. coming, sir. It's perfectly Okay. coming. Yeah. ठीक है. Okay. Rupinder, is the screen visible now? Yes, sir. Visible also. Yeah. Okay. Thank you, man. Thank you. Okay, Single. Thank you. I will try to speak a bit loudly. Okay, it's not a issue for me. So these are different widgets. We have click on the file to open a file. It will open the data set available in the Orange. See, Orange has a lot of inbuilt databases in it. You can create your own database also. And uh, see this next widget, data set. This is a widget if you want to provide the data set from the online repository. If you are quite comfortable with SQL, okay, thank you, Dr. Rupesh. If you are comfortable with SQL table or data with SQL, then also you can import the data from the SQL query also. Otherwise, for the I told in the starting also that this tool is useful for the uh, Navy user as well as the expert user. So if you are having expertise in SQL, you can directly import the data to the SQL tables also. Okay. So now let's start working on some example now.
There is a famous IRIS data set. Those people who might have taught data mining in their teaching career, they might remember this is the IRIS data set. For the other friends who are not familiar with the IRIS data set, I'm just telling in a brief here because we will be using this IRIS data set as an example in the whole presentation. IRIS data set is basically a plant sort of data set where a plant has some characteristic, has a leaf, and its leaf has some characteristics like sepal length, sepal width, petal length, petal width. And depending upon the dimensions of these four parameters, we classify that some sort of disease to the plant in some category. That there are three types of disease to the plant. That name is Iris cetasoa, Iris varici, Iris virginicolor. I will discussing all those names in the next slide. Our concern is not about the that concern that particular classes or particular instances. Our concern is only that we are working on some data, and that how the process will work. You can use your data. Data is what is data? Data is just numbers only. We get some table, we get some Excel value, we get some features extracted. Many of you might be using feature extraction tools, and then you will be using feature selection. After using feature selection, you are going to optimize your result, and you need some classifier. At that time, the orange will come handy. Okay. So this is the data table. When you click on the data table, we have this 150 instances. This is sepal length, sepal width, petal length, petal width. There are certain mathematical values given here. This is the inbuilt data which you have retrieved from your corresponding algorithm. Say any of you are doing some research work and you got some data, you got some some sort of features. These are features, you can say cetasoa. If I drag this slide, there are two other features. One name is versicolor, another is virginica. We have 150 instances. Okay. So how does Orange will work? You have to click on the file widget. Just clicking on the file widget will do its work. When you click on the file, the file icon will be available in this canvas part. Okay. Let me annotate. You have to click on this file widget. The file will be visible here. You have to click on the data table. When you click on the data table, you have to connect the file to the data table. Okay. When you click on the file to what will be the contents of the data table now? Since we have already selected the IRIS data set, you have to, when you click on the file, it will ask which data set you want to load. So by default, it will be containing the IRIS data set only. The IRIS data set has to be connected with the data table. And then our purpose was to visualize this data, that how this data is being going to visualize. So for this purpose, you have to connect the file to another plot. You have to drag this down and select scatter plot. Okay. Or you can directly left click the your mouse here. Then you will be able to visualize the scatter plot here. Let me clear this. So the basic thing what we did here now is we are going to just make some sort of drawing key हमने, ठीक है? Nothing else we have done here. So this is a scatter plot. Okay. Somebody's written something in the chat box. Let me see. Okay, recording session. One of the fellow coordinator has mentioned that recording will be available on the YouTube. Okay. Thank you, Aman. So this is a scatter plot. Please see once again the back slide. We have connected file with the data table. When you click on the data table, you will be able to see this slide. Okay. And when you click file to the scatter plot, you can easily visualize this whole graphical arrangement of the three classes. See here, if you now take a screenshot of your data and put a picture in your report, get a colored printout, it will create a good impact on your research work, that you are going to, that you have represented your data in the form of a visual analysis. This is the one of the first advantage of the scatter plot. And scatter plot, we all are quite familiar with the scatter plot. We are going to make study around 7 to 8 types of plots here, which you are not familiar in our normal life. Generally we deal only with the flow charts or the box plot or a Venn diagram. Okay, there are around 15 to 20 types of plots, but please make sure
Don't add unnecessarily all types of plots in your report just for the taking the increasing the number of the pages. Just feel which plot is convenient to your research work. Okay, then you can. So don't think that I have told about orange and there are 15 plots and just to increase the or to create a good visual. Over visual analysis is also not required. So please incorporate only those visual plots which are useful for your research work. So other plots can be created by Orange here now. One is a box plot, other is a sieve diagram. I use box plot in my PhD report. Sieve diagram, scatter plot. Scatter plot is very popular now. Venn diagram, distribution. Now, depending on the requirement of your research work, as I earlier told, you can select the type of the plot. Okay. So, how Orange actually works now? Going to show again now. What we did in the previous workflow, this thing was called workflow. Okay. So just like in a C++, we say we are doing programming, or in MATLAB, we are doing writing the MATLAB coding. In Orange, we say we are creating the workflow. Okay. You must have some good knowledge of the machine learning concept. Then you are able to design this workflow. Okay. So we start opening the data in the file widget. We have loaded that iris widget set and we have selected the data table widget. Iris, I earlier told it has 150 species. There are 4 flowers, sepal length, sepal width, petal flower, and petal width. Don't worry about these 4 instances. We have labeled all flowers with these 3 classes, Cetazoa, versicolor, virginica, and we have connected file to the now distribution widget. Now please see, there are around 150 widgets, and in this lecture of 90 minutes I will try to cover around 25 to 30 widgets. I will try to cover rest of the widgets. You can yourself practice. Okay, see now, I did this yesterday also. I have a file. I connected this with a data table. Okay, when you are going to visualize a scatter plot which you are going to add in your PhD or thesis report, please, for getting the scatter plot, you have to directly connect it to the file only. Don't connect scatter plot to the data table. Okay, because data is stored in the file only. Data table is just for visualizing that table contents only. You have a distribution plot also now. Okay, so see this. This is the dotted line now. If this is the dotted line, if you click on scatter plot here after this dotted line, okay, so the output will be, there will no output. For getting the scatter plot, you have to click to they do this thick line. Okay, let me annotate again. So this line, this connection is wrong now. I just told, if the connection is wrong, the lines will be now dotted one. These are dotted one. Okay, and this is the thick one. You, for to get this, to visualize the scatter plot, you have to click here. To get the distribution plot, what is distribution? Distribution is another type of plot you can have in your thesis report. For any type of the plot, you have to click to the file. Then you have to click the right click of your mouse here. The number of plots will be visible, and you can select any of the plot which you feel is required for your research work. Sure. This is the visualizing data. This is the distribution plot. We have discussed the scatter plot. This is the visualizing plot. From here, you can readily write that for the iris cetazoa, the range is from 0 to say zero point 0.9. For iris versicolor, the range is from, you can have the x-axis range and you can have the y-axis range. And for the iris virginica, you can have the x-axis and the corresponding y-axis range. So the difference can be easily picturized here. Okay. Another thing which comes in our mind here, now this is a scatter plot now. So you can have the two different plots here. See, I'm not going to discuss any machine learning algorithm. Our basic task is to how to visualize the data which we retrieve through the machine learning algorithms. Okay. So when we visualize this scatter plot, see here, when we visualize this scatter plot, you can see some of the classes are merging now. This red color, this green color, this red color, this green color. We cannot easily capture all the data. There are sometimes some classes might be overlapping. If you are familiar with the machine learning algorithm, there are some sort of classes which get overlapped and which lead to wrong results. Okay. For that purpose, what we can do when we visualize a scatter plot, the result was a bit messy. The classes were not well separated.
So the petal length and petal width were easily separated the three classes. What we can do, we can have some another selection here. Let me do you practically again. What we have to do, we need to select capture this data, okay, with the help of a dragging tool. I will show in the next slide. And then again we will be having a scatter plot here, okay. It's difficult to write through this annotating tool. Then we have to again we get the scatter plot of this overlapping part. Means there are some classes which are merging with each other. You cannot visualize them easily. So we have to capture that subset of the data from the scatter plot which we have already retrieved here. Okay, just see how it's happened. Okay, this was the part which was overlapping. Okay, I selected this part only. For now, how will we visualize this? We have the data table, we have the distribution table, we have the scatter plot. And from the scatter plot, what we did, we captured again, just you have to drag your mouse on the classes which are being overlapped. Okay, you will be able to see another scatter plot here and just see the difference here. This is another scatter plot. Means चीजें वही रहेगी लेकिन व्हाट विल डू इट विल क्रिएट ए बिग स्कैटर प्लॉट ताकि क्लासेस जो ओवरलैप हो रही हैं वो भी आपको सही ढंग से आप यू कैन विजुलाइज देम. So this is another unique feature. नहीं तो generally we feel a lot of disadvantage when we generally होता क्या है जब when we do machine learning the classes which we are overlapping हम उन classes को redundant समझ के निकाल देते हैं. We remove them considering them as redundant. So scatter plot gives you an option of fine tuning those classes. Okay. There are different methods how you can add widgets in the orange. These are very simple one. Either you left click करके आप widget को डाल दीजिए canvas में आ जाएगा, or you can drag and drop any in the canvas. You can use the most simple one. Just click on the file widget. The file widget will be available in the canvas. वो अपने आप उठ के canvas में आ जाएगी. The number of times you will be clicking on the file. आप 3 बार फाइल को क्लिक करोगे तो 3 बार वो कैनवस में आ जाएगी. ठीक है. The extension name of Orange is OWS. Orange अपने different formats को भी support करता है. OLS, XLS, tab and .csv. The data, whatever data in this is in these three format is quite compatible with Orange. And what is basically your data? क्या होगा? Data will be some table where there will be some rows and some columns. ठीक है. चलिए हम एक काम करते हैं. I'm creating my own database. मैं अपना एक database बनाता हूँ तो उसको मैं Excel में सेव कर लेता हूँ. ठीक है. Now we are going to we have a group of people whether we can predict the gender based on the physical characteristics. Can we predict the who is male and who is female on the basis of some gender characteristics? Okay. Let's see here. Okay. See, we are creating our own, some fictitious data we are creating now. Now people have name. आप में वैसे बहुत हैं उनके नाम होंगे. Just see this. Amit is another name similar to my name. Anil Reddy, Apeksha Chaudhary, Asim Debla, Bansari, Dhanlakshmi, Naresh, Dr. Parvati, Dr. Rupesh, Dr. Anu. So what we are going to see here, we are having some names which we are quite familiar also. We have some gender, we have some height, we have some weight, and how they look alike, how the आंखों का रंग कैसा है, बालों का रंग कैसा है. We have created a Excel file. हम इन सब की एक Excel file बना लेंगे. ठीक है. नाम तो will be alphabetical, while some will be your numeric and some will be qualitative attributes. ठीक है. So see here, क्या बनाया मैंने. This is the name. ठीक है. We have some. We have created one Excel file. Gender, height. This is weight, looks, eyes, name, color. We have some category. Gender हो सकता है male, female हो सकता है. Height आपको numeric value enter करेंगे. Weight will be some numeric value. Looks क्या हो सकती है? Chubby, short, slim, tall. Eyes कौन से रंग की हो सकती है? Hair color कौन से रंग का हो सकता है? Okay, these are some fictitious data. Now करना कैसे होगा? Open this database through the file widget. You store on your desktop and then browse and open that file widget. Okay. When we click on the data table, it is generally Orange assume the
the first column as the correct column, and it contains the, suppose somebody is being classified on the basis of the name itself. Some column has to be considered as a has to be the master column, on the basis of which the other columns will be the instances of those column. Okay, but sometimes वो क्या करता है, हेयर कलर को उसने पहला क्लास वेरिएबल ट्रीट कर लिया. Now ऑन द बेसिस ऑफ हेयर कलर तो हम ट्रीट नहीं कर सकते ना कि कौन मेल है कौन फीमेल है. आप में से काफियों के रंग मेल फीमेल के हम जो हेयर कलर्स हैं सेम होते हैं. तो व्हाट वी नीड टू डू, हमें डेटा भी उस ऑरेंज को बताना पड़ता है कि एक भाई प्लीज सिलेक्ट दिस थिंग एज द मेन column through which the other categories will be selected it. यहाँ पर मैं आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करके बता रहा, सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि वॉट एवर डेटा बेस यू क्रिएटेड इट, एंड इन दोस in that complete data set you have to select the column widget on the basis of which the further classification will be done. Sometimes the automatic orange select automatically, तो आपको column widget लगाना पड़ेगा. एक column widget एक क्या है ये देखिए. This is the file, we have the data table, this is the file, this is the select column. Select column means when you click on this widget you have to click that particular table, आपके पास खुल जाएगा. You have to click that particular column कि अपने जेंडर के बेस पे अपने मेल फीमेल डिस्टिंग्विश करना है, नाम के बेस पे करना है, या हाइट या वेट के ऊपर बेस पे ऊपर करना है. This is your algorithm and criteria has been specified by you, but Orange treats sometimes wrong. तो इसके लिए एक विजेट बनाया गया, दैट इज सिलेक्ट कॉलम. तो आप जब सिलेक्ट कॉलम को आप करोगे तो आपका डेटा टेबल जो है पहले बना हुआ है अब नया बन जाएगा, डेटा टेबल 1 बन जाएगा, एंड देन यू कैन सेव इट. This is the important part. So whenever you are using your algorithm, तो आपको ये खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से कॉलम को आपने मास्टर मेन ट्रीट करना है, बाकी उसके मेटा एट्रीब्यूट्स बन जाते हैं. अगर ऑरेंज नहीं करता है, गलत कभी कभी कर जाता है, बिकॉज ऑरेंज इज जस्ट अ टूल. सो दिस इज a column by which you have to do some manual selection also. Orange have some magic also. Okay, you need to create the data sets from the graph you want. The most wonderful feature of the Orange is that you can do the reverse process. This is the problem which is faced by many of the researcher कि भाई database नहीं मिलता, आपको data कहाँ से मिलेगा. In fact, when I was doing my PhD, तो I was doing in the medical images, तो हमें data की बहुत problem आती थी. I have to do a tie-up with one of the university of in Germany, Asian University. हमने उनके साथ टाई अप किया था. तो फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी वी गॉट द डेटा. फिर तो बाद में तो पढ़ते गए, तो देयर वाज लिंक्स पे बहुत बन गए थे. लेकिन ऑरेंज हैज मेड समथिंग मैजिक फॉर यू पीपल. सो हाउ जनरली हम करते क्या हैं, वी हैव सम डेटा एंड वी प्लॉट द ग्राफ ना, बट ऑरेंज कैन डू द रिवर्स आल्सो. यू जस्ट drew some drawing and then Orange will provide that data for it. Okay, so Orange has another widget called paint data. Paint data widget है, आप जब क्लिक करोगे देख लेना, paint है उसका नाम. मैं आपको प्रैक्टिकली को बताता हूँ कैसे करते हैं. You have to select two variables x and y. ठीक है, you have to keep on, let me annotate it again. You have to select this variable x and variable y. You can create this two variable. Just click with your mouse wherever random, you have to click here some sort of clicks. Okay, just I'm doing some randomly. Okay, this is a paint data widget. You have to paint data widget. When you click on this randomly on your screen, okay, so then when you click on the next part, this paint data, you have to connect this paint data to the data table. You will find a very wonderful data set created for you people just by simple drawing. So if you are working on, the limitation of this paint data is that it can create, say, initially for the two variables only. तो अगर आपको टू वेरिएबल्स का डेटा चाहिए जिसकी रेंज 0 से लेकर 1 के बीच में हो सकती है, तो दिस इज ए वंडरफुल एग्जांपल व्हिच यू कैन यूज इन योर रिसर्च वर्क. मान लीजिए आप दो पैरामीटर्स पे काम कर रहे हैं. इन दोस पैरामीटर्स देयर आर two values will be coming and the value of the both will be 0 and 1, and you can have some sort of fictitious analysis on that particular data. अगर आपने उसके ऊपर कुछ काम करना है तो आप दो वैल्यूज क्या एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो. इनिशियली ये
ऑरेंज 2 ही का ही क्रिएट कर रहा है, मे बी आने वाले दिनों में नेक्स्ट वर्जन में you will find more variables also. So you can create the data from just painting only. आपने just painting करनी है और data create कर पाओगे. Clear? Clustering is a very important component in machine learning. We all are quite familiar with this. So what clustering does? Clustering नाम से ही clear है. Cluster create करना to discover interesting groups in our data. Many of people are sitting here. There are around 42 participants. I assume there will be 7 from Punjab, 7 from Tamil Nadu, 7 from Andhra Pradesh, 5 from Uttar Pradesh. So we basically हम कर रहे हैं, हमने clusters बना लिए हैं. Clusters are those things which are grouped in a similar, which are grouped basis on their similarity. ठीक है? तो clustering is a wonderful way to discover interesting groups in our data. We can have customer segmentation, we can find the genes family, social network analysis कर सकते हैं. तो यहाँ पर Orange have some facility called hierarchical clustering. The very famous widget here is hierarchical clustering. I'm not going to discuss hierarchical clustering here. Just a brief idea होता क्या hierarchical clustering, because if you have studied clustering तो आपको hierarchical clustering पता होगी, लेकिन मैं आपको ऑरेंज में करके दिखाऊंगा hierarchical clustering होती कैसे है. So it discovers a group of similar data instances by organizing them in the form of a hierarchical tree on the basis of some similarity. So what हम उसी iris data chart के ऊपर काम करें दोबारा. We have that iris data set. We have 150 iris flower which were belonging to Cetazoa, versicolor and virginica. Okay. देखिए अगर आपके पास रियल लाइफ में वो सैंपल्स रख दिया जाए टू एन अनट्रेन्ड आई, जब आपको वो टेबल ही बना के दे दिया जाए, ठीक है, जिसमें वो वैल्यूज गिवन है, वी कैन नॉट टेल कि कौन सी किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है. ठीक है. So data sets contain measurements of some sepal and petal dimension, which we have seen in the initial only. There were some mathematical values, and we assume that these give rise to some interesting clustering. उसमें होता क्या है, जो वैल्यूज मैथमेटिक्स की किसी खास रेंज में आ रही हैं उनको क्लस्टर बना देता है. ऑब्वियस की बात है कि आरिस सेटासोआ है जो उसकी इतनी मैथमेटिकल वैल्यूज हैं उसकी रेंज की, आरिस वेरिसिकलर की इतनी है, आरिस वर्जिनिका की इतनी है. देन हाउ वी कैन विजुअलाइज दॉट क्लस्टर्स, वो आगे एक हम टूल पढ़ने वाले हैं, विजिट. दैट टूल इज this is how it is done. You need to have a file. ठीक है. To find the clusters we find the file को हमने distance में feed करना है. Distance is a important component of the hierarchical clustering. Distance को अपने hierarchical clustering से connect कर देना है. Hierarchical clustering will create another visual graph for you. That graph is called dendrogram. Dendrogram में होता क्या है, whatever the categories they fall in some specific category, वो किसी जो आइरिस सेटासोआ वाले हैं, आइरिस वेरिसिकलर या आइरिस वर्जिनिका, वो सब के सब स्पीशीज इकट्ठे होकर नजर आ जाएंगे आपको विजुअलाइजेशन में जब आप देखना चाहोगे. जस्ट हियर दिस इज द पार्ट हियर, मैंने कुछ स्क्रीन को हाईलाइट भी किया हुआ है. दिस इज आइरिस सेटासोआ. आप देख रहे हैं कि कुछ कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं. दिस ग्राफ इज कॉल्ड ए डेंडोग्राम. ओके. So don't go into the details of the hierarchical clustering because मैं हर machine learning को नहीं explain कर रहा. So this is another tool by which we can visualize those things. Okay. Now to see these clusters, we need to select the hierarchical clustering widget, and further मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ. You can skip this. चलिए, hierarchical clustering तब कर ही लिया आपने. Next आ जाइए. All I see is Silhouette. Silhouette is another plot for us. It is a method for visually assessing the cluster quality now. Degree of the cluster membership, so that we couldn't wait to get into the orange. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? We will be going to visualize the average distance between the instances within the clusters and the instances in the nearest cluster. देखिए ध्यान से. There are two values now fixed for the Silhouette plot. Silhouette में दो values ही आप देख पाएंगे. Iris Cetazoa, Iris virginicula. I will be plotting a Silhouette for those things, but criteria यहाँ पर रखा है Silhouette में. Silhouette close to 1, it indicates that a data instance close to the center of the cluster. Instance with Silhouette score close to a 0 are on the border between the two clusters. Okay, just see here. मैं दिखाना चाहूँगा आपको क्या है. हम आइरिस वाले डेटा सेट के ऊपर लेके चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं वो के मीन्स एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं. ये देखिएगा रिजल्ट क्या है. दिस इज द वर्कफ्लो. वी हैव द फाइल. अपने के मीन्स क्लासीफायर लगाना है आइरिस डेटा सेट के ऊपर. आप
उसका स्कैटर प्लॉट बना के देखिएगा। फिर के मीन्स क्लासीफायर, यू माइट बी फेमिलियर विद उसमें होता क्या है के मीन्स एल्गोरिथम में। मैं लास्ट में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में बता भी दूंगा एक रिव्यू के लिए। तो के मीन्स के बाद अपने डेटा को सेल हुड प्लॉट कर कलेक्ट करने हैं। नाउ वी हैव ए स्कैटर प्लॉट, वी हैव ए सेल हुड प्लॉट। देखिए क्या बनेगा। दिस इज ए सेल हुड प्लॉट। ये बड़ी मजेदार चीज है। किसी ने, मैंने पीएचडी के मेरे पास पेपर भी आते हैं रिव्यू होने के लिए, some good journals. Never a single time I have seen the cell hood plot in any of the thesis work. Now you can add a cell hood plot in your PhD report based on your data. तो ये बड़ा अच्छा impact create करेगा, but you must know the terminology of behind the cell hood plot कि ये इस ग्राफ का एनालिसिस दिखाना पड़ेगा। ये तो एक छोटा सा बच्चा भी, मैं अपनी 10 साल की बेटी को भी बोल दूं कि सेल होड प्लॉट बनाना है तो शी कैन क्रिएट इन द थ्रू द ऑरेंज, बट एज ए PhD or as a research scholar, you will need to incorporate these things for the complete understanding. Okay. चलिए, so how was a scatter plot? This was scatter plot and this is a cell hood plot. दोनों तरीके से आ गया। हमने डेंडोग्राम भी किया था। बॉक्स प्लॉट आई हैव नेवर शोन बिकॉज बॉक्स प्लॉट बहुत लोग यूज कर रहे हैं आजकल, तो यू कैन रेडीली यूज इन योर PhD रिपोर्ट्स। चलिए, कुछ थोड़ा सा आपको होमवर्क दे रहा हूँ छोटा सा। इफ यू डाउनलोड ऑरेंज तो प्लीज ट्राई दिस, थोड़ा सा करके देखिएगा। एक छोटा सा माइनर प्रोजेक्ट दे रहा हूँ, बीटेक या एमटेक के स्टूडेंट्स अगर अटेंड कर रहे हैं इस कोर्स को। वी विल यूज सेल होड प्लॉट ऑन ए क्लास एट्रीब्यूट ऑफ आइरिस। ठीक है, हियर इज अवर हाइपोथेसिस। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। द डेटा इंस्टेंस विद द लो सेल होड वैल्यूज आर ऑल दोज दैट विल बी मिस क्लासिफाइड। से अपने करना क्या है, रैंडम फॉरेस्ट यूज कर रहे हैं। ये अपनी फाइल है, स्कैटर प्लॉट बना के देखिए, फाइल का सेल हुड प्लॉट बना के देखिए। फाइल को अपने टेस्टिंग और स्कोरिंग भी करनी है। इफ़ यू आर फेमिलियर विद टेस्टिंग एंड स्कोरिंग तो कोई इशू नहीं है। रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर यूज करना है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्रिएट करना है और वेन डायग्राम बन करना है। इसको अपने लैपटॉप पे करके देखना। मैं इसको छोड़े जा रहा हूँ। यू कैन विजुअलाइज द स्नैपशॉट बाय प्रैक्टिस द लेटर ऑन योर स्नैपशॉट्स। ओके, चलिए, द कूलेस्ट थिंग इन द ऑरेंज। ऑरेंज में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या कर सकते हैं, मशीन लर्निंग हैज ए वन वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, प्रेडिक्शन के काम बहुत आती है। वी ऑल आर क्वाइट फेमिलियर प्रेडिक्शन करना, आज बारिश होगी या नहीं होगी। ठीक है, आज मौसम कैसा रहेगा। जो आप गूगल भी देखते हैं, वी ऑलवेज सी गूगल प्रेडिक्ट्स भाई मौसम कैसा है। तो हाउ डज इट प्रेडिक्ट बेस्ड ऑन सम पैरामीटर्स ओनली ना। तो it they take the help of the machine learning algorithm on the basis of which some classification is done कि बारिश होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर प्रेडिक्शन भी कर सकते हैं। देखते हैं कैसे करते हैं प्रेडिक्शन ऑरेंज में। Now we will be exploring again मैं iris data set लेके चल रहा हूँ because मैं for your complete understanding I have not changed the data set. Okay, since we have worked so much, so मैं आपको बार बार अब iris की कहानी नहीं सुनाऊंगा उसके अंदर क्या होता है। We have the 3 flowers and of course there are some label attached to। अब कोई लेबल नहीं अटैच कर रहे। ठीक है, अब एक नया डेटा सेट बना रहे हैं। ठीक है, we have created our own fictitious data set and no label is attached. Now we are going to predict कि वो किस कैटेगरी में फॉल करेगा। यही तो हमारा काम है ना, वी आर गोइंग टू प्रेडिक्शन। ठीक है, चलिए करना क्या है, ये बना सकते हैं आप एक्सेल में और यू कैन क्रिएट सम CSV फाइल। वी हैव सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, कुछ भी लिख दीजिए जो रैंडम आपके माइंड में आती है, उन उसकी जो रेंज में फिट कर रही है। आप मास्टर डेटा, यू कैन सी द मास्टर डेटाबेस एंड यू क्रिएट सम फिक्टिशियस डेटाबेस। ओके, यहाँ पर मैं क्लासेस नहीं लेबल कर रहा। तो हाउ ऑरेंज विल डू द प्रेडिक्शन, चलिए देखते हैं। Now, surely you don't want to go through all the 150 flowers to properly match the 3 new iris. आप एक के पास तो जाके नहीं चेक कर सकते ना, तो that will be a donkey's job. And see, we all are engineers, we always do some smart work. तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? First, we need to train the model on the existing data set. Okay, what we are going to do, we will connect that file widget to the chosen classifier। जो भी आप classifier use कर रहे हो, उसके results को वो prediction के अंदर वो फीड कर देगा। यहाँ पर एक नया विजेट आया प्रेडिक्शन। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको कैसे हुई है सारा प्रोसेस इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग थियोरेटिकली। दिस इज द मॉडल व्हिच आई क्रिएटेड, दिस इज द वर्कफ्लो। सी हाउ इट इज बीइंग डन। वी हैव द इनिशियल फाइल जो आइरिस की थी, वी हैव द डेटा टेबल, उसका देखने के लिए हमने ट्री क्लासीफायर यूज किया। ठीक है, कोई भी क्लासीफायर यूज करेंगे, सम सॉर्ट ऑफ क्लासिफिकेशन हैज बीन डन।
the tree classifier is being fed to the prediction. On the basis of the tree classifier, some sort of prediction will be done. These value fall in Iris cetaceoa, this value fall in Iris versicolor, this value fall in Iris virginica. These predictions will be connected to another file one, which is my fictitious file which I have created. This is the data table. जब आप डेटा टेबल को देखोगे तो यहाँ पर वो जो चौथी वैल्यू थी उसकी कैटेगरी की वो मिस थी मेरे पिछले केसेस में. You can see here the here E was empty here. तो यहाँ पर आप देखोगे ये उसने सारे के सारे मैंने रैंडम लिखे थे सेटोसोआ सेटोसोआ सेटोसोआ, ये उसने सबको नॉर्मलाइज कर दिया. ये वाली वैल्यूज मैंने लेके चला था, सेपल लेंथ सेपल विड्थ पेटल लेंथ पेटल विड्थ. यू कैन सी हियर यही है 5 3.2 1.3 0.4 5 3.2 1.3 0.4 उन सबको उसने नॉर्मलाइज कर दिया. मैं नॉर्मलाइज बाद में बताऊंगा भी क्या होती है. तो ये तीनों के तीनों आयरिस सेटोसोआ कैटेगरी में आ गए हैं. दोबारा देखिए हाउ इट वाज डन. वी हैव ए फाइल, वी कनेक्टेड टू द डेटा टेबल, वी हैव ए फाइल. ये डेटा टेबल से दिखाने के लिए ये आपका ओरिजिनल डेटा टेबल था. एंड दिस डेटा टेबल इज द data table which of the only the 4 instances which I have created some randomly, and thus it was able to do the prediction with the help of which widget का नाम है prediction widget. Clear? I thought I hope कि आपको ये prediction थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कैसे करना है. prediction widget यूज कर रहे हैं यहाँ पर. कुछ और widgets हैं जो रिसर्च में काम आती हैं. One is widget called pre-processing. This is a very important widget. Pre-processing जनरली क्या होता है, आपके पास रिफाइनमेंट करना. ठीक है. नाउ सी दिस, एक डेटाबेस बनाया fictitious सा. We have a name, we have years employed, we have years income, position, उनका मेल फीमेल है, how many holidays they have, उनका एक्सपीरियंस कितना है इंडस्ट्री में. नाउ यू आर सेइंग हियर यहाँ पे कुछ अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, कुछ वैल्यूज हैं थोड़े स्मॉल वाली वैल्यूज हैं 0 1, कुछ बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज भी हैं 42,000 37,000 36,000. ओके, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ. तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं देखिए, व्हेन वी आर गोइंग टू डू प्री प्रोसेसिंग इज कॉल्ड द रिफाइनिंग ऑफ द डेटा. तो जब डेटा को रिफाइन करना होता है तो उसे डेटा को नॉर्मलाइज करना पड़ता है. नॉर्मलाइज मीन वी वांट टू कीप ऑल द डेटा इन द सेम रेंज. अब 0 और 1000 में बहुत फर्क है, 5 और 500 में बहुत फर्क है, लेकिन 0 और 5 में इतना फर्क नहीं है, 5 और 10 में इतना डिफरेंस नहीं है. Now see here 13 3 15 10 5, this has not a lot of difference, लेकिन 13 and 42,000 is a different. यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस है. 3 and 37,000 is a lot of difference. 5 and 36,000 and so on is a lot of difference. 0 and 12 is not a difference. 1 and 17 is not a different. तो करना क्या चाहते हैं हम, we want to normalize these values. क्या करेंगे, एक fictitious डेटा सेट बना लिया हमने. ये चेक करना है कंपनी ने कि किस एम्प्लॉयज को छुट्टी मिल सकती है बेस्ड ऑन द ईयरली इनकम, कितने एम्प्लॉयज हैं उनके अंदर, कितना उनको एक्सपीरियंस है. एक डेटाबेस बनाया fictitious सा. यहाँ पर एक नया प्लॉट बनाएंगे. द प्लॉट इज कॉल्ड हीट मैप. प्लीज मेक श्योर अगर मुझे हीट मैप आपको पता समझ लग गया तो आप पक्का इसको अपनी PhD या थीसिस या किसी भी अपने स्टूडेंट, मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स आर getting in this, are already they have done PhD, they might be guiding in PhD also. Some students who guide भी कर रहे होंगे. Please try to incorporate heat map whenever you are doing normalization. It will create a very good examiner, very good impact on the paper also, which you are हम कभी पेपर लिखते हैं तो heat map अगर बना दिया जाए उसके अंदर, heat map डेटा नॉर्मलाइज करके दिखा देता है. You will see how it happen. तो देखिए क्या होगा. देखिए अब थोड़ा डिफरेंस था उस डेटा में. ईयरली इनकम वाज ए वेरी हाई नंबर 42,000 36,000. जो दूसरी वैल्यू थी एक्सपीरियंस वाली 13 14 15 वो स्मॉल न्यूमेरिक वैल्यू थी. तो आप नेचुरली देखोगे तो डेटा में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है. देखिए 1 शुड बी कंपेयर्ड विद 5 ओनली, 5 शुड बी कंपेयर्ड विद 7 ओनली, लेकिन 5 को 500 के साथ कंपेयर करना है तो आप क्या करोगे, यू आर गोइंग टू नॉर्मलाइज 5 and 500. तो नॉर्मलाइजेशन क्या करेगा, it will transform your data. Okay, it will transform your data from the scale 0 to 1 से लेकर 5 को छोटा कर देगा, 500 को भी छोटा कर देगा. लेकिन when we will comparing 5 and 500 on the normalized scale of 0 to 1, the impact will be less. तो heat map क्या करता है, ये यही काम करके दिखाता है. ठीक है. Although this data is a total fictional data, but
आप डिफरेंस देखिए जब बनाया मैंने, ये देखिए, दिस इज द नो नॉर्मलाइजेशन। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ग्राफ आ रहे हैं, ये लाइट ब्लू कलर, डार्क ब्लू कलर और येलो है, ये डार्क ब्लू कलर। जब उसको डेटा को मैंने नॉर्मलाइज कर दिया हीट मैप बनाने के बाद, तो ये सारा का सारा डेटा ओवरलैप कर गए। यू कैन सी द ऊपर वैल्यू कितनी है, 1 से लेकर 46,000 है, ठीक है। 1 से लेकर, ये देखिए मैं नोटेट दोबारा कर रहा हूँ, एक मिनट। This is 1, this is 46,000. 1 and 46,000 seems to be a huge difference. But when we normalize the data to minus 1.7 to 1.68, तो ये कुछ सुनने में आपको नॉर्मलाइज भी हो गया और बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नज़र नहीं आ रहा है इसके अंदर, ठीक है। दिस इज द मैजिक ऑफ द हीट मैप। आप अपनी रिपोर्ट में लगा सकते हो जब डेटा को नॉर्मलाइज करके दिखाओगे आप। मुझे याद है इन माय पीएचडी, if somebody, if you are familiar with histogram equalization, अगर आपने किसी ने इमेज प्रोसेसिंग में पढ़ा है तो हम हिस्टोग्राम बनाया करते थे। अगर मुझे हीट मैप पता होता तो मैं डेफिनेटली हीट मैप भी लगाता अपनी रिपोर्ट के अंदर। तो द प्री प्रोसेसिंग नीड टू बी यूज विद कॉशन। कभी कभी प्री प्रोसेसिंग में ये होता है कि कुछ वैल्यूज मिस हो जाती हैं। जनरली जो बायोमेडिकल वाले होते हैं वो नॉर्मल वैल्यू को वो ट्रीट नहीं करते, तो मिसिंग वैल्यूज को आपने निकालना पड़ेगा यहाँ पर, जो एक्चुअल वैल्यूज चाहिए, क्योंकि वो मिसिंग वैल्यू को भी रैंडमाइज कुछ उसको नॉर्मलाइज कर देगा, खाली जीरो को भी वो। आगे आ जाइए, अगला विजेट है डिस्क्रीटाइज विजेट। दिस इज अ वेरी पॉपुलर विजेट। इफ यू आर फेमिलियर विद द मशीन लर्निंग, आपको डिस्क्रीटाइजेशन पता होगी। उसका मतलब बेसिकली क्या है, वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट इनटू द कंटीन्यूअस वैल्यू इनटू द स्मॉल नंबर ऑफ द बिन्स, ताकि वो डिस्क्रीट वेरिएबल की तरह नजर आए। तो मैं आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ करना कैसे है। वी हैव द फाइल विजेट। फाइल विजेट को आपने डिस्क्रीटाइज विजेट के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पर एक नया डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको मैं, सीव डायग्राम। Okay, it would make a little sense to segment the customers by particular age. So binding them into 4 groups, young adult, middle age, senior would be a great solution. तो सीव डायग्राम आपके लिए क्या करेगा, एक देखिए ये डायग्राम है। मैंने सीव डायग्राम बनाया नहीं है, शायद मिस कर गया। प्लीज मेक श्योर आप सीव डायग्राम बना के देखिएगा, तो आप इसको ये भी आपके लिए होमवर्क है छोटा सा। See, whenever you listen to some lecture, please try to inculcate in your teaching, inculcate in your research work or your peers also. जब आप उसे चला के देखेंगे तो ही मजा आएगा। 1-1.5 घंटे में मैं आपको एक्सपर्ट नहीं बना सकता। आई एम नॉट गोइंग टू, ट्रेनिंग नहीं है ये हमारी। ऑल ऑफ वी आर फैकल्टी मेंबर्स, दैट्स व्हाई नेम इज कॉल्ड फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। मैं आपसे कोई बहुत इंटेलिजेंट नहीं हूँ, जस्ट मुझे थोड़ी सी चीज़ बेटर पता है तो मैं आपको आइडिया दे दिया। आप इसको बाद में प्रैक्टिस जरूर करके देखिएगा ताकि आपके पीयर्स को काम आए, ठीक है। आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझ आएगा, आपको आइडिया मिलेगा, तो डेफिनेटली आप उनको भी बताओगे, तो सम पीपल विल डेफिनेटली गेन फ्रॉम सच सॉर्ट ऑफ लेक्चर्स जब भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं ना इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। इनफैक्ट व्हेन आई वाज डूइंग माय पीएचडी, तो आई यूज्ड टू अटेंड सम लॉट ऑफ एफडीपीज, ऑल्दो पांचों की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। मैं ये नहीं मानता कि सारे लेक्चर्स समझ आते होंगे आपको या सारे के सारे लेक्चर्स बड़े अच्छे रहते होंगे। सम कभी कभी आपको कोई इंटरेस्ट हो जाता है, कभी आपको अच्छा लगता है, कभी नहीं अच्छा लगता। लेकिन उन 10 लेक्चर अगर आपने सुने तो 10 में से 3 या 5 लेक्चर जरूर ऐसे होते हैं which you are definitely you are going to incorporate or you are going to use them for your research work or for your stakeholders के लिए यूज करते हैं आप उनको सिखाने के लिए। तो सीव डायग्राम आपके लिए होमवर्क है, ट्राई कीजिएगा इसको। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, यू कैन हैव a screen, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। If you are not going to watch my lecture later also, github.nixie.orange.p master orange dataset, it has a huge repository of the datasets. ये आप किसी भी डेटा सेट किसी भी रिसर्च वर्क में यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं ऑरेंज में ही करना है। कोई भी आपको एप्लीकेशन है जहाँ पर आपको डेटा सेट्स की दिक्कत आ जाती है, आई एम हैविंग अ स्नैपशॉट आल्सो, ये देख सकते हैं। adult tab, adult.zip, annual tab, स्क्रॉल करते जाइए, यू विल गेट अ ह्यूज डेटाबेसेस, और इस डेटाबेस को अपडेट होते रहते हैं। सॉरी, देयर आर नंबर ऑफ पीपल हु कंट्रीब्यूट टू दिस डेटा सेट। अगर आपके पास भी कोई डेटा सेट है, इवन इफ यू वांट कि रिसर्चर उसे यूज करें, तो आप प्लीज मेक ए कंट्रीब्यूशन ऑन github.com/nixie.orange। यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो अपना डेटा सेट, भी बहुत लोगों की काम आती है ये रिसर्च जो होती है ना, कभी भी अकेले से नहीं होती, हमेशा डिस्कशन से होती है। इफ यू फाइंड सम गुड डेटा सेट, don't confine to yourself, always share with your peers and to the whole research community,
ओके, तो दिस इज ए, मैंने भी एक दो यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया थे अपने डेटा सेट्स को। चलिए बस फाइनलाइज कर रहा हूँ मैं कुछ एक्सपेरिमेंटल सेटअप, कुछ कॉमन क्लासीफायर्स की। आपको मैंने आई हैव डिस्कस सीव डायग्राम, हीट डायग्राम, डेंडोग्राम हमने डिस्कस किया, स्कैटर प्लॉट किया, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट किया, तो डिफरेंट डिफरेंट प्लॉट्स किए थे। कुछ छोटे छोटे मैं आपको वर्क फ्लोज बना के दिखाऊंगा, ठीक है, बने बनाए मैंने बना दिए थे कल आपको दिखाने के लिए, वो आप चला के देखना आपको कैसे लगे, ठीक है। KNN, all of you are familiar with the K nearest neighbor classifier. This is very popular. It is a non-parametric method used for classification and regression, and we require three things here. Those who are familiar with KNN classifier, आपको बस storage set of record चाहिए, एक distance metric चाहिए, एक K एक पैरामीटर होता है, number of nearest neighbors चाहिए, जिसकी mathematical equation है। जस्ट समझाने के लिए, थोड़ा सा रिवाइव करने के लिए, इफ यू आर फेमिलियर विद द के मीन, तो के मीन्स एल्गोरिथम को आप कैसे इंप्लीमेंट करोगे। आप आयरिस डेटा सेट लीजिए, यू हैव द आयरिस डेटा सेट, यू नीड टू कनेक्ट विद द डेटा टेबल। तो करना क्या है, अपने सिर्फ KNN क्लासीफायर को क्लिक करना। व्हेन यू क्लिक ऑन द KNN क्लासीफायर, एक पॉपअप विल अपीयर जहां पर आपको नंबर ऑफ नेबर स्पेसिफाई करेंगे। मेट्रिक यूक्लिडियन बाय डिफॉल्ट होगा, वेट यूनिफॉर्म होगा, तो दिस विल do the KNN classification for you directly। आप क्लासीफायर कहाँ मिलेंगे, ये जो विजेट है मॉडल, दिस इज द मॉडल विजेट। ये मॉडल विजेट के अंदर ये आपको CNN, KNN, ट्री टाइप, रैंडम फॉरेस्ट, SVM, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, नेव बायस, ADA boost, neural networks, stochastic gradient, okay, any of the, this orange is being constantly updated। You only need to know the understanding of the corresponding model you are using, ठीक है। आपको मॉडल के बारे में पता होना जरूरी है, बस आप मॉडल का इस्तेमाल कीजिए, अपने एल्गोरिथम के अकॉर्डिंगली पैरामीटर सेलेक्ट कीजिए, रेस्ट ऑफ द टास्क विल बी डन बाय द ऑरेंज इटसेल्फ। क्लियर? चलिए, दिस इज द, ये KNN का आगे आप क्लासीफायर भी कर सकते हैं। वी हैव द आयरिस डेटा सेट, डेटा टेबल बनाया हमने, KNN क्लासीफायर लगाया, KNN क्लासीफायर के लगाने के बाद हमने प्रेडिक्शन कर दी, प्रेडिक्शन के बाद आपने नया डेटा प्रेडिक्ट करके बता दिया, लीनियर प्रोजेक्शन। अब जरूरी नहीं है कि आपका ये जो डेटा है, आपने आयरिस डेटा सेट बनाया, आयरिस डेट के अलावा आपका खुद का डेटा सेट भी हो सकता है, आप उस पर KNN क्लासीफायर लगाइए, मजे से आपका प्रेडिक्शन आ जाएगी, जो भी आपका रिजल्ट होगा। ओके, तो द जो आपने कम सम वर्क करना सा, इसकी कोडिंग करनी थी मैटलैब के अंदर जाकर या C++ के अंदर जाकर, वो सारी के सारी काम बहुत आसान हो गए। बट फ्रेंड्स, प्लीज बी श्योर you must have the full command of that complete this workflow as well as KNN classifier। उसके आपको कॉन्सेप्ट पता होने जरूरी है, ठीक है। Decision tree we are using readily in our algorithms also। It is used to visually and explicitly represent the decision and decision making task। Predictive modeling इससे कर सकते हैं, डेटा माइनिंग मशीन लर्निंग में बहुत यूज होता है, कॉन्सेप्ट इसमें एंट्रोपी का यूज होता है। वी हैव द फाइल विजेट। डिसीजन ट्री के लिए वी नीड द डिसीजन ट्री एल्गोरिथम। वी हैव द डेटा टेबल प्लॉट कर लिया, वी हैव द ट्री एंड दिस इज द ट्री व्यूअर। ट्री व्यूअर को मैटलैब में बनाना हो तो बहुत टाइम लगता है, डिसीजन ट्री का पहले कोडिंग लिखनी पड़ती है, फिर आप उसका सारा उसके पैरामीटर्स एंटर करते हो, फिर जाके ट्री व्यूअर आता है। यहाँ पर 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, आपको सिर्फ ट्री के आपकी क्लासीफायर पता हो, दे आपका ट्री बन गया। अब बड़े आराम से इसको अपनी प्रिंट आउट निकालिए, एक अच्छा सा कलर्ड प्रिंट आउट यू कैन हैव इन योर रिपोर्ट, एंड ऑल यू नो इज दैट हाउ दिस ग्राफ इज बीइंग रिट्रीव्ड। सो दिस इज अनदर मैजिक ऑफ द ऑरेंज, कि आपको डिसीजन ट्री बड़े आराम से मिल जाता है बना बनाया। रैंडम फॉरेस्ट बड़ा फ्लेक्सिबल और सिंपल एल्गोरिथम रहा है क्लासिफिकेशन में, मॉडल में। ओवरफिटिंग प्रॉब्लम को दूर करता है। ओवरफिटिंग मैंने अभी थोड़ी देर पहले वो स्कैटर प्लॉट का दिखाया था, एक क्लास दूसरी क्लास का मर्ज कर रही है, ठीक है। यूज फॉर आइडेंटिफाइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर फ्रॉम द ट्रेनिंग डेटा सेट। दोज हु आर नॉट फेमिलियर विद द ट्रेनिंग एंड द टेस्टिंग डेटा सेट, मैं आपके लिए जस्ट छोटा सा एग्जांपल देके बता सकता हूँ। सपोज कीजिए वी हैव 100 सैंपल्स, 100 सैंपल में से आपने 20 सैंपल्स को हम टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने का मतलब है वी ऑलरेडी डिफाइंड कि 20 सैंपल में से पहले 10 सैंपल क्लास ए में है और बाकी 10 सैंपल क्लास बी में है। अब आगे क्या होगा, वी हैव द रिमेनिंग 80 सैंपल्स एंड विद द हेल्प ऑफ अवर क्लासीफायर वी ट्रेन द 80 सैंपल्स, और उन 80 सैंपल्स में से कितनी वैल्यू, जब 80 सैंपल्स में से 60 सैंपल क्लास ए थे,
20 सैंपल क्लास बी थे, एंड हाउ एक्यूरेटली योर क्लासिफायर इज गोइंग टू प्रेडिक्ट दोज थिंग, वो आपका रिजल्ट कहलाता है, वो आपकी एक्यूरेसी कहलाती है, वो आपकी सेंसिटिविटी, स्पेसिफिसिटी, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, जो भी पैरामीटर्स निकल के आते हैं, एफ स्कोर, हार्मोनिक मीन, ये सारे पैरामीटर किसी भी थीसिस के अंदर निकालने पड़ते हैं, विच शो द एक्यूरेसी और द क्लासिफिकेशन रेट ऑफ योर एल्गोरिथम। ठीक है, तो रैंडम फॉरेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव द फाइल विजेट, वी हैव द डेटा टेबल, वी हैव द टेस्ट एंड स्कोर, यहाँ पर टेस्टिंग एंड स्कोरिंग लगानी पड़ेगी। टेस्टिंग एंड स्कोरिंग क्लासिफिकेशन के काम आती है, इसको रैंडम फॉरेस्ट का कनेक्ट करेंगे। वी हैव द कंफ्यूजन मैट्रिक, कंफ्यूजन मैट्रिक जस्ट ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव दिखाता है, एंड यू हैव द प्रेडिक्शंस। ओके, यू विल फाइंड आउट द रिजल्ट इन अ वेरी सिमिलर फैशन। ये आपका रिजल्ट आ गया, रैंडम फॉरेस्ट। एरिया अंडर कर्व आप देख रहे हैं, प्रेडिक्शन है, रिकॉल है, ये कुछ पैरामीटर्स किसी भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को जब आपने एग्जीक्यूट करते हैं, वी नीड सम क्वालिटी मैट्रिक्स ऑल्सो, एटलीस्ट 10 से 15 तरह के क्वालिटी मैट्रिक्स निकाला करें, नहीं तो जनरली हम एरिया अंडर कर्व या एक्यूरेसी तक ही सीमित रह जाते हैं। देयर आर नंबर ऑफ क्वालिटी पैरामीटर्स विच वी नीड टू रिट्रीव टू जस्टिफाई कि हमारी क्लासिफिकेशन सही हो रही है नहीं हो रही है। तो रैंडम फॉरेस्ट अगर आपने इस्तेमाल किया है तो बड़े आराम से आप टेस्टिंग, कंफ्यूजन मैट्रिक्स, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ये सब चीज़ें निकाल सकते हैं। प्रिसिशन, रिकॉल, एफ स्कोर, हार्मोनिक मीन। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ ऑल दीज टर्म्स बिकॉज ये मेरे कॉन्टेक्स्ट में नहीं है आज के लेक्चर में, बट ये सारे के सारे बड़े फेमिलियर टर्म्स हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम में जो भी लोग काम करते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर अगर आपने मैटलैब में करना है या सी प्लस प्लस में करना है तो आपको बकायदा इनकी कोडिंग लिखनी पड़ती है, प्रिसिशन का फॉर्मूला लिखना पड़ता है, कितने ट्रू पॉजिटिव है, कितने ट्रू नेगेटिव है, एक्यूरेसी, यहाँ पर सारे के सारा काम पका पकाया आपको मिल रहा है। ठीक है, बट द ओनली यू नीड टू नो कि वो टेस्टिंग एंड स्कोर में वैल्यू कितनी लगानी है, कितने सैंपल को टेस्ट करना है, कितनों को ट्रेन करना है, रैंडम फॉरेस्ट के क्या पैरामीटर्स होंगे, देन द हार्डवर्क जो आपने किया वो सारा का सारा आगे जो हार्डवर्क है उसका ऑरेंज कर देगा। एक आगे है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या करता है, इट इज यूज्ड टू असाइन द ऑब्जर्वेशन टू द डिस्क्रीट सेट ऑफ द क्लासेस। मैं स्किप कर सकता हूँ, ये कुछ जो नहीं पढ़ा तो जस्ट डायग्राम दिखाना चाहता हूँ हाउ लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज बीइंग यूज्ड। अपनी फाइल को टेस्ट एंड स्कोर के साथ कनेक्ट करने, फिर इसको लॉजिस्टिक रिग्रेशन के साथ कनेक्ट कर देना है बस। ऑरेंज को चाहिए क्या, ऑरेंज नीड, आपने एक एल्गोरिथम बनाया, एल्गोरिथम बनाने के बाद आपके पास कोई डेटा मिल गया है, जो आपका डेटा मिला है उसकी ऑप्टिमाइजेशन आपके लिए ऑरेंज करके दिखा रहा है हर बार। ठीक है, तो वॉट एवर डेटा विच यू आर रिट्रीविंग, the orange is doing the optimization on that data, and it is your task to select the type of the classifier suitable for your research work. I have shown you all those algorithms which are quite popular. आप विजुअलाइजिंग करके भी दिखा सकते हैं उनकी, बाद में उनको क्लासीफायर लगा के अपने रिजल्ट्स को और बेटर दिखा सकते हैं। तो दिस इज द लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये भी आप देख सकते हैं, एरिया अंडर कर्व, F1 इज ऑल्सो ए पैरामीटर, एफ स्कोर बोलते हैं ऐसे, प्रिसिशन, रिकॉल, जितनी अगर तो वैल्यूज अच्छी आ रही हैं, एरिया अंडर कर्व 0.91 आया, 0.91 अच्छा नहीं माना जाता, 0.95 से ऊपर ज़्यादा माना जाए तो एरिया अंडर कर्व अच्छा है। व्हाट डज दिस सिग्निफाई कि भाई जो आपने डेटा बनाया था, जो आपने फीचर्स निकाले थे, जो आपने इनपुट किया था, उसमें कुछ गड़बड़ है, उसमें कुछ रिफाइनमेंट का जरूरी, अभी आपके एल्गोरिथम में कमी है। तो बेसिकली आपको एरिया अंडर कर्व या प्रिसिशन या रिकॉल अगर ये 1 के पास पहुंच जाते हैं, नियर टू 1, तो ये अच्छे माने जाते हैं। अगर ये 80s की रेंज में है, 0.84 है, 0.95 है, तो ये एक ऑप्टिमल सी वैल्यू है। इसका मतलब ये है योर एल्गोरिथम नीड सम रिफाइनमेंट। जो आपने डेटा प्रोवाइड किया था ऑरेंज को यूजिंग सम क्लासीफायर, या तो आपने ट्रेनिंग अच्छे से नहीं की या टेस्टिंग अच्छे से नहीं की, या ट्रेनिंग और टेस्टिंग में क्रॉस वैलिडेशन लगानी पड़ेगी, देन यू गेट द सम एवरेज रिजल्ट्स। तो सारे का सारा जो आउटपुट से आपको पता चल जाएगा कि आपका एल्गोरिथम is going into the right direction or wrong direction. If you are getting the good area under curve, good precision, good recall, ये सारी वैल्यूज अगर हाई एंड पे चाहिए होती हैं मेरे ख्याल से सारी वैल्यूज, तो ये आपका एल्गोरिथम अच्छा गिना जाएगा। एल्गोरिथम मीन वॉट एवर डेटा वी हैव रिट्रीव्ड, बिकॉज एल्गोरिथम के बाद आना क्या है, डेटा। उस डेटा का क्या कर रहे हैं, एनालिसिस विद द हेल्प ऑफ दिस ऑरेंज टूल। एक छोटा सा एमटेक लेवल का प्रोजेक्ट बता रहा हूँ। इफ यू आर गाइडिंग योर एमटेक प्रोजेक्ट, हम जनरली एट आवर कॉलेज आल्सो वी जनरली आस्क स्टूडेंट्स टू मेक सम प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन। एक छोटा सा प्रोजेक्ट है सेंटिमेंट एनालिसिस ऑफ द पीपल ऑन द फेसबुक। ठीक है, दिस इज अ स्मॉल मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट। व्हाट वी हैव टू डू, we have to get the data
suppose how many people are saying in favor of some rule, how many people are not saying in favor of that, are against that rule. Suppose there are 1,000 people who have commented on the Facebook, and out of 1,000 people, it is not possible to find out the positive comment and the negative comments. Okay, so आप क्या कर सकते हैं? You can make your algorithm on the basis of some words which are some words like good, acceptable, uh, uh, some words are negative, not good, are not are the negative words. तो पहला काम क्या करना पड़ेगा? आपको अपना डेटा बनाना पड़ेगा. डेटा बना के you have to make your algorithm, and then you have to classify on the basis of some classifier that how many percentage out of 1,000 are saying in the favor and how many percentage out of 1,000 are not in the favor. On the basis of this, you can have the sentiment analysis. सेंटिमेंट एनालिसिस का मतलब होता है कि लोगों की राय क्या है किसी चीज के बारे में. अगर फेसबुक के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछा गया है तो हाउ मेनी लोग स्पीक्स इन फेवर, हाउ मेनी स्पीक अगेंस्ट इट. इट इज डोंकीज जॉब कि वो हम मैनुअली काउंट करेंगे. वी ऑल आर इंजीनियर्स एंड वी कैन यूज द मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स टू प्रेडिक्ट द percentage of the person who are favor and percentage of the person who are not in the favor. तो आप ये छोटा सा प्रोजेक्ट बना सकते हैं. दिस इज द डेटा टेबल. आप अपना डेटा टेबल बनाइए, एल्गोरिथम बना के, फिर यू कैन हैव द न्यूरल नेटवर्क क्लासिफायर, नेव बायस क्लासिफायर, केएनएन क्लासिफायर, रैंडम क्लासिफायर, लॉजिस्टिक क्लासिफायर, एंड देन गेट ए कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ ऑल दोज पैरामीटर्स व्हिच वी ऑब्टेन्ड लाइक एरिया अंडर कर्व, प्रिसीजन, रिकॉल, एफ स्कोर. वो सारी की वैल्यूज निकाल सकते हैं बड़े आराम से. टू गेट ए वेरी गुड कंपैरेटिव एनालिसिस आपको बड़ा अच्छा मिल जाएगा. एक और टर्म है रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. ये भी आप निकाल सकते हैं. मैटलैब के अंदर बकायदा इसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है आरओसी कर्व बनाने के लिए. तो हियर यू विल गेट दैट कर्व आल्सो. आप बड़े आराम से कर्व निकालिए, उसको अपने पीएचडी रिपोर्ट में लगा लीजिए. तो द टास्क विल बी डन वेरी इजीली. ओके, यहाँ पर कुछ फाइनलाइज मैं कर रहा हूँ. देयर आर सम एड-ऑन्स टू द एक्सटेंड द फंक्शनैलिटी. ऑरेंज कीप्स ऑन अपडेटिंग देयर टूल्स. देयर आर सम इसकी जो मैनेजमेंट है, जो बनाते हैं ऑरेंज को, वो कोई ना कोई इसके अंदर टूल ऐड कर रहे हैं. रिसेंटली इन्होंने बायो इन्फॉर्मेटिक्स टूल भी ऐड कर दिया है. करना क्या होगा, अपने ऑप्शंस में जाकर ऐड ऑन कर दीजिए. सपोज इफ समबडी इज यूजिंग सम एनी अदर एरिया फॉर ऑफ योर रिसर्च वर्क, तो ऐड ऑन्स में जाकर आप सर्च कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा है. इमेज एनालिसिस, नेटवर्क, प्रोटोटाइप, सिंगल सेल स्पेक्ट्रोस्कोपी. Because in the earlier also I told that Orange is not meant for the only for the computers and IT people. It can be used by a person of any domain if it's find suitable some add-ons. So there are some computer engineers, they are working in bioinformatics also. Image analytics is a very popular area of research. Prototype networking is a very popular area of our computer domain. So you can add these add-ons in your, तो directly आपको वो tools भी, वो widgets भी साथ में मिल जाएंगे. As compared to MATLAB and Matrox and other software which are very highly paid, the Orange act as an open source tool, and it provides this all those research tasks at a very in a very easy and simple, efficient manner. But the thing is that, as I kept on repeating in my lecture, that you must have the full command of that machine learning algorithm which you are using to make that particular graph or for the particular prediction. Okay. This is the, you can install them. Okay, now when you are going to install, it will ask you something progress. You can download it from Orange, whatever tool you require. Okay, so this is my end of the lecture. This is the takeaway for your home. I have discussed the introduction to Orange. Some widgets were discussed, some examples I have practiced and tried to show it to the Orange. Some hands-on I was unable to demonstrate because I tried it on my Zoom and the net connection got break because there is some sort of time lag every time. But the domain knowledge is very crucial for you people, and I hope you might have enjoyed this lecture. Thanks for listening, and hope if any query is there, I'm ready here. Participants, any query? Sir, from my side, one question. Yes, while selecting this data set, should we import a data set from the internet, or how to connect to a data set? This one, third option we have data set, CSV file import data set. Yeah.
Can you repeat the question? There is a bit of In sound order disturbance to here. have data Kiran, set, please like in the don't talk. data, third option, Yeah, now speak. Actually, yeah, some participant was. data sets, how to import data sets, sir. Actually, data sets, third option is there. I'm selecting that Okay, one, okay. but the data sets are ठीक है, ठीक not importing. है. Okay. 1 second, I'm trying. Which option when you are talking data sets? Yes, sir, data sets. Ma'am, you have to third option, sir. yeah, I got it. You have to go to the data sets, and then there is option that loaded data sets. When you click on the data sets, it will take you to the some link also, where you have to provide the path of that link. Okay. But it is going to some internet and it is showing Yeah, you have for that internet some you have kind to of data provide set that. browser. Yeah, some kind of that. For that you need to provide the path of that data set where you are getting this. It is better to keep the data set on your desktop, ma'am. Uh, Okay, because sir. Okay, because okay. capturing the data from the internet, it takes some time to browse that data. Acha, There is acha. another. I'm replying to some questions also. Mr. Amit Deogar, it is possible to show the orange. Yeah. I'm showing you. Just 1 second. Um, Amitji, just see here. This is the Amitji, you can see here. This is the orange interface. This is the file widget. I'm clicking on any widget. On data table, we have a connection. Amitji, you can see here. You can on your mic also. Okay. Okay. This is the interface. Okay. Is it possible to see the orange interface? How to get this interface? Amitji, I have given the link also in the starting of the lecture. It was I think 5th or 6th slide when we need to download this from that particular link. Okay, you can see the lecture, and some people have So taken the that data snapshot table also. itself is our data set, sir. Data table is the default data set. The default data set is generally the hard Okay. data set or the iris data set. You can Okay. change any of, you can click on the file and you can select any of that particular data set which you required. Okay, these are the data sets which are inbuilt in the orange. I have tried to create my own fictitious data set for you people for your understanding. Yeah, I download, but I am unable to run it. Amitji, you need to check whether your Windows is 32-bit or 64-bit. Actually, in that lecture, also as I told, I will give you a dump also. I will send my link to Singlaji, and Singlaji will send you to the in your group also. From there, you can download this. It is not a big deal. There you will be getting number of options for downloading the orange, but you have to find the which is compatible with your machine also. Okay. Yeah, Dr. Parvati has given the link also. Amitji, you can see this link, orangebiolabs.download.windows. You just need to check your Windows is 32-bit or 64-bit. Okay, thank you all of you. It was a pleasure to give a lecture here, and it is my parent department, and it is always a pleasure to speak to the nice faculty. Thank you. Thank you, Dr. Kamra. It was a very nice session. You have given a very good knowledge about to the participants who are doing work in data mining and machine learning. They can use this tool very well, and a very good hands-on was given. Thank you very much. Thank you. Participants, tomorrow you have again with us Dr. Partha from IIT Roorkee. He will be discussing the applications of deep learning. Then again, you will have a hands-on session by another expert. He will be giving hands-on on TensorFlow. So kindly be on time tomorrow. Session will start around 9:30. So by 9:25, kindly be there. And feedback form for feedback is shared, and it will be shared in WhatsApp group also. Any query by the participant?
कर दूंगी कर दूंगी हम्म ये नहीं चल रहा